برادران اسلام اواں صبح خاں وٹھی اللہ جو قرآن مجید بدھو دنیا کے اندر جیکی کتاب ہیں وہ دنیا جا کتاب انسان جی زبان تے ایترو پڑھن میں آسان یادگیرے میں ناہن جیترو رب جو قرآن شریفہ دنیا کے اندر مختلف مذہبن سے انسان تعلق وابستگی رکھن تھا عیسائی قوم جی زبان لینگویج بھی آہے کتاب بھی زبان میں آ یہودی قوم جی زبان لینگویج بھی آہے کتاب بھی زبان میں آ ہندو قوم پرانی آہے ان جی زبان لینگویج بھی آہے لیکن ان جو کتاب بھی زبان میں آ قرآن شریف اللہ سائیں ان کے عربی میں بنایو لیکن دنیا جے اندر کہیں بھی کتاب جی زبان اللہ سائیں کہیں بھی قوم علاقے جے اندر نہ رکھی سوائے قرآن پاک جے قرآن شریف وہ اللہ جو مقدس کتاب ہے جو اللہ سائیں قرآن پاک جی عربی بولی انسانن جے اندر محفوظ رکھی جو دنیا جے اندر عرب جا جے کے ملک ہیں انہن عربن ملکن جے اندر جے کے انسان آباد ہیں مرد عورتوں بارڑا اللہ سائیں انہن جی مادری زبان قرآن مجید واری رکھی یہ وڈے میں وڈے کمال ہے قرآن پاک جو یہودی قوم جے اندر پہنجے مذہبی کتاب جی انجیل جی بولی گالائن نہ ہیں عیسائی قوم ان پہنجے مذہبی کتاب جی بولی گالائن نہ ہیں ہندو قوم پہنجے گیتا جی بولی گالائن یہ نہ ہیں واحد قرآن شریف ہے جو اللہ سے قرآن پاک جے عربی زبان عربن جے انسانن جے اندر محفوظ رکھی رہو مسئلو تمہاں اساں اجمی ہوں غیر عربی ہوں مختلف بولن زبان جا انسان ہوں سندھی بلوچ پنجابی پشتو فلان فلان قوموں اللہ سے تمہاں اساں جے اندر بھی قرآن پاک جی زبان محفوظ رکھیا لغت محفوظ رکھیا کیا دین اسلام تے جنہیں انسان حلے تھو بی قوم جو انسان جنہیں کلموں تھو پڑھے مسلمان تھو تھے مسلمان تھیان خان بعد ان کے نماز پڑھنی پوندی نماز اللہ اکبر خان وٹھی کرے السلام علیکم تائیں سجی عربی آ یہ تو کونے رب سائیں صرف عربی بدھے تو بھی بویوں رب سائیں نہ بدھندو آ تاں سندھی میں اللہ کے سڈیو رب تاں جو بدھندو تاں پشتو میں بروہی میں اردو میں جیڑی زبان میں اللہ سائیں کے سڈیو ادونی استجب لکم رب تو فرمائے ماں ہر ایک کے جیو سان جواب دیندو ہاں رب سائیں کے قرآن پاک جی زبان محفوظ رکھنی ان جے کرے اللہ سائیں قرآن پاک جی زبان عربی لغت اجمی انسانن جے اندر جے کے لکھا مسلمان ہیں دنیا جے اندر اللہ سے وہ عربی زبان لینگویج قرآن پاک جی محفوظ رکھی ایڑے طریقے سے ہانے قرآن شریف اللہ سے خود انہی قرآن پاک کے محفوظ کیو ان جے اکھرن کے ان جے پڑھن جے لہجن کے ان جے الفاظ جے معناؤن کے ان جے قرآن پاک جے مفہوم ہے مطلب ہے قرآن پاک جا لفظ ادائیگی اللہ سے حافظ نے قارن وٹ محفوظ فرمائی قرآن پاک جے معنی مفہوم اللہ سے عالمن وٹ محفوظ کئی قرآن پاک جی عملی زندگی اللہ سے اولیاء اکرام بزرگان دین ولین وٹ محفوظ گئی اللہ وارن جی صحبت میں انسان ویندو تو ان کے قرآن شریف جی عملی زندگی ہکڑی ملندی تاجے کر مسلمانو قرآن شریف وہ اللہ جو کتاب ہے جہیں قرآن شریف کے ڈسن جانو اللہ کے ڈسنا قرآن پاک جو دیدار جانو اللہ جو دیدار آ قرآن شریف سا محبت جن اللہ سا محبت ہے عالمگیر بادشاہ تھی گزریو ہندوستان جی دھرتی تے مسلمان بادشاہ جن کے اورنگزیب چیبو ان جی کچہری میں مشاعرہ تھیندا
पोइ हिकिड़ी उन जी आलमगीर बादशाह जी नियाणी ही बीबी ज़ैबुन्निसा जेका शाही महल में वेही करे शेर लिखंदी हुई। पोइ बादशाह जी कचहरी में हिकिड़ो शख़्स वेठो आकिल ख़ान, जंहिंजी दिलि में बीबी ज़ैबुन्निसा सां अक़ीदत ऐं मुहबत थी पई, बुराईअ जे ख़्याल सां न, उन जे ख़ूबियुनि ऐं ख़सलतुनि खे ॾिसी करे त हुन जे अंदरि शेर वॾे कमाल जा आहिनि। हाणे उन आकिल ख़ान बीबी ज़ैबुन्निसा जे तरफ़ न्यापो मोकिलियो त मुंहिंजी तोसां मुहबत थी पई आहे। औरत वॾी अक़लमंद दाना आई। उन आकिल ख़ान खे जवाबु ॾिनो, हिकिड़ी पर्ची लिखियईंसि त दर सुखुन मख़फ़ी सनम चूं बूए गुल दर बर के गुल हर चे ई मन मेलदार दर सुखुन बी नद मुरा। चए आकिल ख़ान ॾिस, हिकिड़ो इंसान गुलाब जी ख़ुशबूअ सां मुहबत रखंदो आहे, पर गुलाब जे ख़ुशबू ॾिसण में न ईंदी आहे। उन जे करे गुलाब जे गुल सां इंसान मुहबत रखंदो। गुलाब जे गुल सां मुहबत रखियईं, ॼण गुलाब जी ख़ुशबू सां मुहबत थी पई। गुलाब जो गुल इंसान ॾिठो, ॼण गुलाब जी ख़ुशबू खे ॾिठई। हाणे उहा ज़ैबुन्निसा औरत थी चएसि आकिल ख़ान, तूं मां जहिड़ी औरत खे ॾिसी तूं छा कंदे? तोखे मूंसां मुहबत है न, जेके मां शेर लिखां थी, जेके मां बैत थी लिखां, तूं मुंहिंजा शेर बैत इहे ॾिस, ॼण तूं उन्हनि खे ॾिठो, ज़ैबुन्निसा खे ॾिठो, तूं उन्हनि जो दीदार कयो, ॼण तूं ज़ैबुन्निसा जो दीदार कयो। ईअं ई अल्लाह जा नेक साले बाना उलमा इकराम था फरमाइनि, जेको इंसान अल्लाह जो दीदार करणु घुरे थो त क़ुरान पाक जो दीदार करे ॼण अल्लाह जो दीदार कयईं। क़ुरान शरीफ़ खे ॾिठई, ॼण रब खे ॾिठई। क़ुरान पाक सां मुहबत, ॼण अल्लाह सां मुहबत। तॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तबर्रक बिल क़ुरान फइन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन्हु। तू क़ुरान सां तबर्रुक हासिल कर, अल्लाह जो कलाम आहे, रब जी ज़ात खां। मुसलमानो, तव्हां असां जंहिं ख़िते जे अंदरि आहियूं, अंग्रेज़ जॾहिं हिन ख़िते ते अचे थो, उन क़ुरान पाक खे मेटण जी कोशिशि कई। हाणे अंग्रेज़ क़ुरान शरीफ़ जे नुस्ख़नि जी क़ीमत सफ़ा आसान कई। सस्ती रक़म में क़ुरान पाक मिले, पोइ उहो अंग्रेज़ क़ुरान खे ख़तमु करण जे लाइ हुननि ॾिठो त हिननि मुसलमाननि में इस्लाम दीन नबीअ जी सुन्नत महफ़ूज़ आहे इन क़ुरान पाक जे करे, क़ुरान शरीफ़ जे करे। हाणे इन्हनि मुसलमाननि मां असां क़ुरान पाक खे ख़तमु कयूं, पोइ अंग्रेज़ क़ुरान पाक जा नुस्ख़ा खूहनि में उछलाया, नऊज़ बिल्लाह मिनहा क़ुरान पाक जा नुस्ख़ा उन्हनि शहीद कया। ईअं ई दिल्लीअ जे शहर में हज़ार खनि दीनी मदरसा उहे जेके हिन मिसमार कया विया, ताकी उम्मत मुस्लिमा मां असां बुनियादी शइ क़ुरान पाक खे ख़तमु कयूं। अॼु बि ईअं ई आहे, अॼु बि यूरोप जी कोशिशि इहा ई आहे त असां क़ुरान पाक खे ख़तमु कयूं, क़ुरान शरीफ़ खे ख़तमु कयूं। पर हे जेको आज़ादी मार्च हो, आज़ादी मार्च बज़ाहिर त अव्हां जे साम्हूं इमरान जे ख़िलाफ़ हो, हक़ीक़त में इहो आज़ादी मार्च मदारिस क़ुरान नामूस रिसालत जे तहफ़ुज़ हिफ़ाज़त ख़ातिर। मूंखे हिकिड़ो ख़ुदि दोस्त पियो ॿुधाए, पूरी सिंध जे सभिनी इदारनि जे मथां आहे। मूंखे चए पियो साईं, मौलाना फज़लुर साहब जो एहसान मदारिस वारा नथा लाहे सघनि, जंहिं आज़ादी मार्च में मदारिस जी एॾी हिफ़ाज़त कई, जे आज़ादी मार्च न हुजे हा त अॼु तव्हां असांजे मदरसनि जो निसाब तालीम सॼी मटियल हुजे हा। तंहिंजे करे मुसलमानो, उलमा जो वजूद वॾी रहमत आहे। त ख़ैर, हाणे अंग्रेज़ जॾहिं ख़ुशि थियो त असां क़ुरान पाक खे ख़तमु कयोसीं, मदरसा ख़तमु कयासीं, आलिम शहीद कयासीं, उन वक़्त में मौलवी मोहम्मद बाक़र जे नाले सां हिकिड़ो आलिम दीन आहे, हिकिड़े अंग्रेज़ जे साम्हूं 3 तालिबुल इल्म वठी आयो, 4 सालनि जो, 6 सालनि जो, 8 सालनि जो ॿारड़ो। उन्हनि जे हथ में क़ुरान पाक न आहे। अंग्रेज़ खे उहो आलिम दीन थो चए, तूं त क़ुरान शरीफ़ जे ख़तमु करण जी कोशिशि कई, तूं त ख़ुशि थिए, मां क़ुरान पाक जा नुस्ख़ा शहीद कया, दरियाहनि में उछलाया, मदरसा ख़तमु कयमि, उलमा खे शहीद कयो। ही मासूम ॿारड़ा आहिनि तुंहिंजे साम्हूं बीठा आहिनि, जंहिंजे सीननि में क़ुरान पाक जा 30 सिपारा 114 सूरतूं महफ़ूज़ आहिनि। जंहिं ॿारड़े खां जाथों पुछंदे तोखे क़ुरान पाक उतो ॿुधाईंदो वेंदो। हाणे उहो अंग्रेज़ 8 सालनि जे ॿारड़े खां इम्तिहान थो वठे, उहो क़ुरान पाक जो नुस्ख़ो अंग्रेज़ जे हथ में आहे, उन मासूम मुसलमान जे बच्चे जे हथ में क़ुरान पाक न आहे।
अंग्रेज़ जाथों पुछे थो मुसलमान जो ॿारड़ो 8 सालनि जो अंग्रेज़ खे जवाबु ॾींदो थो वञे क़ुर शरीफ़ जूं आयतूं पढ़ंदो थो वञे वरी उहो अंग्रेज़ 6 सालनि जे ॿारड़े खां इम्तिहान थो वठे 6 सालनि जे ॿारड़े खां क़ुर पाक जो नुस्ख़ो अंग्रेज़ जे हथ में आहे उन ॿारड़े खां यादि क़ुर पाक थो पुछे ॿारड़ो क़ुर पाक जी आयत फर करे उनखे ॿुधाए थो 4 सालनि जे मासूम ॿारड़े वटि अंग्रेज़ उन जे साम्हूं जॾहिं अचे थो उन खां बि इम्तिहान थो वठे क़ुर पाक जो नुस्ख़ो अंग्रेज़ जे हथ में आहे मासूम ॿारड़े खां इम्तिहान थो वठे जॾहिं 3 ॿारड़ा क़ुर पाक जे इम्तिहान में कामयाबु हुया उहो अंग्रेज़ पंहिंजे मथे ते पेशानी हणी चवण लॻो मौलवी मोहम्मद बाक़िर असां बर्तानिया खां इहो इरादो खणी आयासीं त हिन एशिया जे ख़िते ते दीन ऐं इस्लाम आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सुन्नत ऐं सीरत आहे बुनियादी उन्हनि जी शइ क़ुर पाक हो तंहिंजे करे क़ुर पाक जे ख़त्म करण जो असां साज़िशूं कयूंसीं बज़ाहिर त असां ख़ुशि थियासीं मुसलमाननि ते असां क़ाबिल थियासीं पर मौलवी मोहम्मद बाक़िर अॼु तूं 3 ॿारड़ा मुंहिंजे साम्हूं आंदा आहिनि जंहिंजे हथनि में क़ुर पाक न आहे सीननि में क़ुर शरीफ़ महफ़ूज़ आहे अॼु मां तुंहिंजे साम्हूं इक़रार थो कयां त हे क़ुर अल्लाह जे तरफ़ां नाज़िल कयल आहे हिन खे दुनिया जी का बि क़ुवत ऐं ताक़त ख़त्म नथी करे सघे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून तॾहिं रब साईं फरमायो असां क़ुर पाक खे नाज़िल बि असां कयो आहे इन जे हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो बि असांजे मथां क़ुर पाक जी हर अदा उम्मत मुस्लिम वटि महफ़ूज़ आहे मुसलमानो क़ुर शरीफ़ सां वाबस्तगी रखूं अल्लाह करीम तव्हां असांजे इन ईमानी जज़्बनि खे हमेशह दाइम ऐं क़ाइमु फरमाए अल्लाह से हिन इदारे खे बि ता क़यामत आबाद फरमाए जन हाफ़िज़नि क़ुर शरीफ़ पढ़ो असुल क़ुर पाक सां मुवाफ़िक़ अमली ज़िंदगी आहे मुसलमानो असुल अमली ज़िंदगी आहे हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाह वलीउल्लाह जो फ़र्ज़ंद अंग्रेज़ सां मुनाज़रो थो थिए अंग्रेज़ सुवाल थो करे तव्हां मुसलमान हक़ ते हो शाह अब्दुल गनी था जवाबु ॾियनि था असां हा हक़ ते आहियूं सचा मुसलमान आहियूं चए दलील कहिड़ो आहे चए दलील असां वटि क़ुर पाक आहे हाणे उहो अंग्रेज़ थो चए मौलवी अब्दुल गनी साहब तूं त वॾी ॻाल्हि कई तव्हांजे क़ुर पाक में असरु आहे शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ खे जवाबु था ॾियनि त हा जेको जंहिं इरादे सां क़ुर पाक पढ़ंदो क़ुर पाक में असरु आहे बीमार ते पढ़बो त ख़ुशि थी वेंदो मुसीबतुनि वारो पढ़ंदो त मुसीबतूं लही वेंदियूं जंहिं जूं हाजतूं हूंदियूं क़ुर पाक पढ़ंदो त हाजतूं पूरियूं थींदियूं दुश्मन जो हमिलो अथसि क़ुर पाक पढ़ंदो त रब हिफ़ाज़त कंदुसि अंग्रेज़ जे हथ में ट्रामो हो चए मौलवी अब्दुल गनी तूं अजीब अजीब क़ुर पाक जा कमाल पियो ॿुधाए हे ट्रामो मुंहिंजे हथ में आहे तूं थो चए त क़ुर पाक में असरु आहे जंहिं शइ सां जंहिं इरादे सां क़ुर पाक पढ़बो त असरु कंदो हाणे तूं हिन क़ुर शरीफ़ खे हिन ट्रामे जे मथां पढ़ ऐं ट्रामो सोन थी वञे मां मञींदुमि त तव्हांजो मज़हब दीन इस्लाम सचो आहे तव्हांजो क़ुर पाक सचो किताबु आहे शाह अब्दुल गनी फरमायो जेकॾहिं क़ुर जे पढ़ण सां ट्रामो सोन थियो त तोखे मुसलमान थियणो पवंदो चए बराबरि ॻाल्हि सही आहे शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह उहो आलिम दीन आहे जंहिंजे रब जे क़ुर ते एतिरो यकीन हो अंग्रेज़ खां ट्रामो वठी हथ ते रखी करे मुसलमान क़ुर शरीफ़ जी का वॾी सूरत न पढ़ियई आम नंढड़ी आयत हर हिकिड़ो मुसलमान पढ़ंदो आहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शाह अब्दुल गनी इहा आयत पढ़ी ट्रामे जे मथां दम था करनि उहो सोन थो थी वञे हाणे उन इंसान कलमो पढ़ी मुसलमान थियो मौलाना अब्दुल गनी खे चवण लॻो मौलवी अब्दुल गनी साहब इहो असर क़ुर पाक में आहे या तुंहिंजी ज़ुबान में आहे आलिम दीन फरमाइण लॻो असुल असर क़ुर शरीफ़ में आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾ जंहिं मुसलमान जी ज़िंदगी क़ुर पाक जे मुआफ़िक़ हूंदी उन जी ज़ुबान में असरु हूंदो जंहिंजी ज़िंदगी क़ुर पाक जे मुआफ़िक़ न हूंदी उन जी ज़ुबान में असरु कान हूंदो मुसलमानो क़ुर पाक जे मुआफ़िक़ पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे हे को मासूम ॿारनि जो किताबु कोन्हे हे सिर्फ़ु ज़ुबान ते पढ़ण जे लाइ न आहे इंसान सुठनि सुठनि अदायगियुनि सां पढ़े मक़सदु इहो आहे त मुसलमान जी पूरी ज़िंदगी क़ुर पाक जे मुआफ़िक़ हुजे अल्लाह साईं तव्हां असांखे क़ुर शरीफ़ सां वाबस्तगी अता फरमाए अमली ज़िंदगी अता फरमाए अल्लाह साईं हिन इदारे खे मौलाना फज़लुल्लाह साहब जे महिनतुनि ऐं कावशुनि खे अल्लाह साईं ता क़यामत आबाद फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन या अल्लाह या रहमान या रहीम اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب حزننا اللهم خلط القرآن بقلوبنا اللهم خلط القرآن بدموعنا اللهم خلط القرآن بأعضائنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى التقوى اللہ سے قرآن شریف سے اساں کے وابستگی عطا فرما
अल्लाह से नंढनि वॾनि खे क़ुर पाक पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमा, सही अदायगी जी तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनखे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह से उनजे मुआफ़िक़ असांजी ज़िंदगी बणा। रब साईं जेके असां जूं कमियूं कोताहियूं आहिनि दूर फ़रमा, पंहिंजे क़ुर शरीफ़ जे तुफ़ैले बीमारनि खे शिफ़ा अता फ़रमा। मुहताजनि जे मथां अल्लाह साईं जूं हाजतूं पूरियूं फ़रमा, कर्ज़दारनि खे कर्ज़ खां निजात अता फ़रमा, मदारिस दीनीअ जी हिफ़ाज़त फ़रमा, उलमाए उम्मत जी हिफ़ाज़त फ़रमा। या अल्लाह साईं जेके बि हाजतूं आहिनि सभिनी इंसाननि जूं पूरियूं फ़रमा। अल्लाह साईं हिन शहर हिन ॻोठड़े जे मथां ख़ुशूसी बाज फ़ज़ुल फ़रमा। रब साईं दुनिया में जूं तूं असांखे क़ुर पाक सां ताल्लुक़ अता फ़रमायो, क़ब्र में आख़िरत में क़ुर शरीफ़ जी सिफ़ारिश असांखे अता फ़रमा। ईमान सां रहाए, ईमान सां ख़ात्मो बिल ख़ैर फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व बारक वसल्लम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा